I'm not done yet. You're right. A hero has so much to protect in this world. You've gotten weaker, All Might. When you think you can't go on anymore, look inside. I must remember Remember why it is you clench your fist. where I started. Your past. Remember where you came from. Keeping your origin in mind will help push you past your limit. He should have been out of power a long time ago. I'm coming for you! I don't think so, because I am here. Stand up and show them why you're better! You won't be able to stop him head on. Can you still fight? It's do or die. You must go past your limit. I will. What the hell's going on with that weak little body? Looks like we made it in time. No matter how scared you are, you should smile to show that things will be okay. In this world, the ones always smiling are the ones who are the strongest. I prefer you to remain silent. Are you holding back against me? Win this! Beat him! Come on, All Might! In my heart, I remain the symbol of peace. Which is why I will defeat you! तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। अब हम निकल पड़ेंगे वापस घर की तरफ। तो मैं बता दूं आप सबको कि ये है नेचर पार्क मोहल, जहाँ पर मॉर्निंग में एंट्री फ्री होगी आपको, क्योंकि लोकल्स फिटनेस हेल्थ को प्रमोट करते हैं और सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सब आएँ और यहाँ पर वर्कआउट करें, फिट रहें। एक अच्छा कम्युनिटी, एक अच्छी नई चहल पहल जिसमें हेल्थ एंड फिटनेस बना रहे, तो यहाँ सब यही चाहते हैं और पूरे भारत में भी यही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुबह के मौसम में यहाँ पे ज़्यादा कोई यूथ आते नहीं है। यहाँ पे सारे ओल्ड एज पीपल होते हैं जो कि हंसते गाते रहते हैं, योगा करते रहते हैं और कुछ व्यायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। तो मुझे अच्छा लगा। आज की शुरुआत मैंने इसी तरीके से की थी, हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, मेरे चैनल को प्रमोशन मिलती है, ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुँचेगा, जो और ज़्यादा फिटनेस एंथुजियास्ट होंगे, फिटनेस फ्रीक्स होंगे, जिनका सिमिलर माइंडसेट होगा, उन्हें ये वीडियो पहुंचेगी। और ये जितने भी टॉप लेवल के वर्कआउट होते हैं, जितने भी टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं, वो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे देते ही देते हैं अपने फिटनेस के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं जैसे 75 हार्ड में भी 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट करने पड़ते हैं। दैट मीन्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स इन टोटल। ऑलराइट, तो 45 मिनट्स का वर्कआउट तो 1 टाइम करना ही पड़ेगा, सेकेंड टाइम आपको आउटसाइड जाना पड़ेगा, है ना। तो मेरी सबसे आशा है कि सब अच्छे से करें वर्कआउट और इसको एक लाइफस्टाइल बना दीजिए। ठीक है, अगर आप फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बना देते हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे,
अच्छे लोगों के साथ खुले मिलेंगे, है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।